Good morning, students. So, today we're gonna start with our chapter 2, that is nutrition in animals. So, before starting up, I would like to tell you that what is nutrition. Basically, nutrition हमारा क्या होता है? That is followed by the following steps as we are seeing, like digestion, digestion, correct? Absorption, assimilation, and egestion. As you can see the diagram over here, egestion means होता है intake, right? So the intake of the food, okay? So what is egestion? That is intake of our food. So when we intake the food, that is known as, basically that particular process is, so the intake of food is known as the egestion. Next step is digestion. The breaking down of the food into a simpler form is known as the digestion. So, if you will see your book, these steps has been given to you. First of all, what is nutrition? Nutrition वो process होता है in which we transform our food intakes, जो भी खाना हम खाते हैं, to get the energy for doing the work, उस process को बोलते हैं nutrition. ठीक है? Just to provide us the energy. इसमें हमारे कुछ स्टेप्स है लाइक इनटेक ऑफ फूड लाइक इजेशन डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म एब्जॉर्प्शन मीन्स वही सॉल्युबल फॉर्म को जब हमारे ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड एसिमिलेशन मीन्स उसको यूटिलाइज करना बॉडी के लिए ठीक है एनर्जी जो होती है that is assimilation and the last is egestion means जो left out part होता है that will be discarded from our human bodies. So हमने plants का first chapter में पढ़ा था nutrition with the help of the photosynthesis. Now with the help of this diagram you understand there are the 5 steps, right? First one is the intake of the food. As you can see, your chapter 2 page number 15, correct? 15 पे you will go through with the first and two paragraphs about the digestion, digestion, absorption means होता है वही जो breaking होती है हमारी फूड की कॉम्प्लिकेटेड फूड की उसको एब्जॉर्प्शन होता है थर्ड स्टेप में एसिमिलेशन जब एब्जॉर्ब कर लिया अब एनर्जी के लिए उसको यूज करना डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए राइट एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है दैट इज द absorption in which the food in the soluble form is passes into the body fluids such as blood. अब डाइजेशन हुआ ब्रेकडाउन हुआ हमारा सिंपलर फॉर्म से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से सिंपलर फॉर्म में उसके बाद क्या होता है फूड हमारा क्या होता है एब्जॉर्ब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से राइट उसके बाद हमारा जो फूड हमारा सिंपलर लिक्विड फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है तब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट में पास ऑन राइट पास ऑन वाला प्रोसीजर इज नोन एज एब्जॉर्प्शन इसके बाद आता है एसिमिलेशन दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द सेल्स राइट आफ्टर दैट द फिफ्थ प्रोसेस इज moving out of these food particles that is known as egestion करेक्ट तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्ट पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो बाहर निकल जाता है तो दीज आर द स्टेप्स नाउ वी विल स्टडी द न्यूट्रिशन इन द अमीबा करेक्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट दैट इज अमीबा में न्यूट्रिशन हमारा कैसा होता है एज यू कैन सी द डायग्राम ऑन द स्क्रीन दैट न्यूट्रिशन इन अमीबा सब सो इसके दो हमारे पार्टिकल्स होते हैं पहली चीज ये होता है हमारा फूड पार्टिकल्स ये फूड होता है ये हमारी होती है न्यूक्लियस उसमें ठीक है ये होते हैं इसके फॉल्स फीट ये क्या होते हैं फॉल्स फीट राइट इसको हम लोग क्या बोलते हैं सूडोपोडिया तो क्या होता है फूड पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे आता है अमीबा अपनी शेप चेंज कर लेता है with the help of its false feet that is known as pseudopodia फूड वैक्यूल होती है इसके अंदर ठीक है उसमें क्या होता है ये फूड पार्टिकल जाता है जैसे ये डाइजेस्ट हो जाता है यही सूडोपोडिया से ये बाहर निकल आता है ठीक है आफ्टर बीइंग डाइजेस्टेड इट थ्रो आउट द
left food, right? So this entire process is known as, this is the nutrition in the amoeba. इसी तरीके से nutrition होता है amoeba में, right? The unicellular amoeba engulfs tiny particles of food by throwing its false feet known as pseudopodia around it. Correct? The pseudopodia join together to form a small cavity known as a food vacuole. The food inside the vacuole is digested by the digestive juices, as I told you. ये जो हमारे होते हैं ये होते हैं फूड, ये फूड पार्टिकल होता है, दिस इज अ फूड वैक्यूल जो कि इसमें प्रेजेंट होती है जैसे ही फूड एंटर करता है. दिस इज अ न्यूक्लियस, इट चेंजेस इट्स शेप, शेप अपनी चेंज करता है सो दैट इट एनगल्फ मतलब अंदर जाना फूड को. After being digested by the digestive juices, it throws out the undigested food by changing the shape in the similar process. So these false feeds is also known as pseudopodia. Correct? Now, moving on to the next part, turn out the page. We are just come with page number 16. We have covered the digestion in the amoeba. Now, the second case is given to you is Hydra. Hydra is a simple multicellular animals. Correct. It has a number of tentacles around its mouth, hairy-like structure, as you can see the diagram given on page number 16, B1. Correct. अमीबा का भी डायग्राम गिवन था और नीचे उसका हाइड्रा का भी गिवन. तो जैसे ही अपने हेयर से वो स्टिक कर लेता है एक्वेटिक एनिमल को एंड अंदर अपना क्या कर लेता है वो उसको इंटैंगल करके जस्ट दे देन पुश इट इनटू द माउथ एंड इनसाइड द body cavity the digestive juices secreted by the surrounding cells help to digest the food. अब digestion complete होता है यहाँ पे भी with the help of the digestive juices. The frog uses its long sticky tongue to catch the insects. टंग से वो क्या करते हैं फ्रॉग का डाइजेशन होता है अंदर क्या होता है पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस राइट. The unicellular paramecium has a stiff hair-like structure called cilia. You have to practice all the three diagrams given on your book page number 16. These all are important. If you have any problem in that, you can ask me up. तो cilia होते हैं hair-like structures, which is also helps इसके movement से क्या करता है वो digestion complete करता है. The constant movement of cilia pushes the food particle into the mouth like a structure called paramecium. The rest of nutrition processes are similar to those in amoeba. A spider weaves a sticky web in which small insects get stuck. It then injects digestive juices into the body to the insects. As we have done the discussion of the mosquito, उसमें एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो ब्लड को क्या करता है सक करता है. आइदर एंड सक करने के बाद यही ये हमारे लिक्विड डाइट पे होता है इसीलिए इसके पास टीथ वगैरह नहीं होता. Thus, the digestion of the spider's food actually takes place outside the spider's body. The spider then sucks up the digested food and then the digestion will be completed. Now the mosquito sucks up the blood with the help of proboscis. The housefly also lives on the liquid food. It uses saliva to dissolve the food to form a solution. Then the solution with the help of its feeding, right? It sucks the solution. ऐसे ही butterfly में भी होता है. It uses its proboscis to suck the nectar from the flowers. So ये the different type of organism which is being used in the digestion. अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा थोड़ा सा कैसा होता है कॉम्प्लिकेटेड वन राइट. इसमें क्या होता है एज यू कैन सी माई स्क्रीन ओवर हियर यू कैन सी द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है ये हमारा क्या होता है माउथ. यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है इनटेक ऑफ फूड यानी इजेशन. यहाँ से स्टेप वन हमारा क्या होता है यहाँ से स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द माउथ. अंदर टीथ होते हैं सलाइवा होती है यहाँ पे सलाइवा की ग्लैंड होती है यहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है ताकि इस पाइप से दिस इज आवर फूड पाइप. इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं दिस इज द फूड पाइप. ठीक है.
तो ये क्या करता है, फूड को यहाँ लेके आता है। फाइन, जैसे ये लीवर से आएगा, जैसे ये ओसोफेगस से आएगा, होते हुए ये कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में। यहाँ पे हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंस होते हैं, इन सब का जूसेस क्या होते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। Now, in the book, we have firstly study about the process of digestion. क्या क्या process होते हैं, we will study in detail. So basically, page number 17, 18 and 19 is about the complete process of digestion. उसके बाद hardly one topic is left, that is ruminants में कैसे होता है. So we will having the discussion of digestion. आधा हम इस टर्न पे कंप्लीट करेंगे. बाय द नेक्स्ट टर्न आई विल बी फिनिश अप विद दिस टॉपिक कंप्लीटली, डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड रूमिनेंट्स. तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस पेज के बारे में. 17 पेज नंबर से, जहां से एक्चुअली डाइजेशन इन स्टमक स्टार्ट होता है, या डाइजेशन प्रोसेस है पूरा. वी विल कवर द 3 पेजेस, that is 18, 19 and page 20 in our next lecture, right? So prepare this part. So now, what is digestive system? The human digestive system, our body performs the steps of nutrition inside a long tube, polite in some places, called gut or an alimentary canal. It has mainly mouth, ठीक है, माउथ होता है, हमने अभी डिस्कस किया, ओसोफेगस या फिर फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन एंड एंडिंग टू द रेक्टम एंड एनस. जो हमने अभी अभी पढ़ा कि रेक्टम क्या होता है, एनस क्या होता है, सबसे आखिरी में प्रेजेंट होते हैं, एज यू कैन सी द डायग्राम. नाउ salivary glands, liver, gallbladder and pancreas are organ that secrete the digestive juices which convert the complex substances into the simpler one. The digestive juices are secreted by the inner walls of the stomach and the small intestine. तो जो भी हमारे glands हैं वो क्या secrete करते हैं, digestive juices. Now digestion in the mouth.